So, respected students, once again I'm in front of you, and today the topic which I would like to share with you is that features of effective writing. There are so many ways, there are so many tools in your English language, and one of the important effective tool is writing. It's been well said that most of the successful persons, most of the successful persons in the world, they could not be effective writers, but a person who is far more effective in writing, he is successful in one way or the other way. So today we write so many things in English or in English language. See, for example, you have to write letters, whether those are formal letters or whether those are informal letters, or whether those are business letters or any unofficial letters. The style of writing, the way with which you want to convey your message to your friends, to your officials, to your subordinates, what sort of clarity or what sort of skill you must possess. आपके पास उतनी skill कैसी होनी चाहिए, आप कौन सा मेथड यूज करते हैं आपकी राइटिंग पे, that's to be needed or that's to be understood first. How we have to write things, how we have to make things more effective from the traditional way, from the traditional method. Or at times we write any message, we write even emails. In the present scenario, in the modern context, we see that we write emails. The style of writing that needs to be enhanced, what sort of style we must possess, or the important things from the grammatical point of view. At times we write big essays, हम essays maintain करते हैं, हम precise writing करते हैं, हम compositions develop करते हैं. The methodology, जो methodology हम use करते हैं, एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए लिखने का, राइटिंग का. वी मस्ट हैव गुड राइटिंग स्किल्स. तो थोड़ी सी बात हम करेंगे आप यहाँ पर फीचर्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग. ये इफेक्टिव राइटिंग कैसे डेवलप होती है, what sort of things we must take into consideration while writing. The first thing, if we are having many important features while we write anything, whether it is any extract, whether it is any article, whether it is any message to our friend, whether it is even letter, whether it is even composition, चाहे composition है, चाहे कोई paragraph है, so we are having some important tools, we are having some important steps which we must follow. Number first is unity here. Features of effective writing पे सबसे बड़ा point है जहाँ पर हम देखते हैं कि we must have unity. Unity से मुराद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, you must have a clear idea what we have to write, हमें क्या लिखना है. And the first sentence which you want to write, that must be enough impressive, that must be enough strong, and that must convey the whole meaning in detail. वो इतना effective होना चाहिए. और जो thoughts, जो expressions आप डालना चाहते हैं आपकी writing में, they must have a good coherence. उनमें coherence होनी चाहिए, वो meaningful होनी चाहिए. वहाँ पर वो आपकी thought divert नहीं होनी चाहिए. आप useless sentences आपकी writing में आपको नहीं डालने हैं, so that the reader will not feel any kind of good taste. So unity में हम वही बात रखते हैं. And after that there must be clarity. Clarity का मतलब है clarity of thought. What you want to express, it must be expressed in its most pure sense, in its most pure form. You must not beat the bush while writing any kind of extract. जब भी आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, आप useless, आप बड़ी बड़ी हाई फाई मेटाफोरिकल लैंग्वेज या सिमिली उसमें डाल सकते हैं, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए. You must have a concrete idea what I had to write, where I had to reach, what sort of message I had to convey. वो आपकी दूसरे पॉइंट पे आती है जिसको बोलते हैं क्लैरिटी. एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज बीइंग कॉल्ड एज कंसाइजनेस. कंसाइजनेस का मतलब यह है कि द राइटर जो आप लिखना चाहते हैं, इट मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग, सो दैट the reader would not attain his interest, his sense of interest. जो उसका इंटरेस्ट होगा वो खो बैठेगा. आप बहुत ज़्यादा
especially this thing is being taken into consideration where you are writing any business letter आप लिखते हैं या कोई और चीज़ लिखते हैं, वहाँ पर हमें देखना है कि our write up it must be concise, neither it should not be too brief, ये उतना ब्रीफ भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर ये अच्छी तरीके से अपनी मीनिंग को रिफ्लेक्ट ना करें. सो एक तीसरा स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं कंसाइजनेस. एंड नंबर फोर्थ इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी से मुराद ये है कि वी मस्ट नॉट हैव टू मच ग्रामेटिकल एरर्स. आवर लैंग्वेज इट मस्ट बी सिंपल. इसमें सिंपल लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए एंड डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. वी मस्ट यूज डायरेक्ट लैंग्वेज एंड समटाइम्स इफ वी वांट टू यूज इन पैसिव वॉइस, अगर हम पैसिव वॉइस यूज करना चाहते हैं तो वहां पर हमें ख्याल रखना है द लेवल ऑफ रीडर, जिस रीडर को हम यहाँ से भेजना चाहते हैं उसकी लेवल क्या है. यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू राइट a complex write-up to your boss and the same type of write-up for a peon. So it must be taken into consideration that your write-up it must be accurate, it must be in a balance, and after that there must be fifth point है यहाँ पर completeness से मुराद ये है कि जो मेन थीम, जो मेन चीज आप उसमें डालना चाहते हैं, द मैसेज विच यू वांट टू कन्वे इन दैट राइट अप इट मस्ट बी बैलेंस्ड, इट मस्ट बी कंप्लीट. आप ज़्यादा बम्बास्टिक वर्ड्स उसमें ना यूज़ करें, आप ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी उसमें ज़्यादा डेवलप ना करें. लेट यू कीप योर थीम, लेट यू कीप योर थॉट्स, एक्सप्रेशंस, आइडियाज इन सिंपल. एंड आफ्टर दैट देयर इज सिंपलिसिटी. जो हम सिंपलिसिटी यहाँ पर लिख रहे हैं, सिंपलिसिटी का मतलब है कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज, कम्प्लेक्सिटी नहीं डेवलप करनी है, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जो थीम से रिलेटेड हो, जो डाइवर्ट ना हो. देयर इज अ टर्म जिसको हम बोलते हैं डाइग्रेशन का मतलब है वो डाइवर्ट ना हो, आपकी मेन थीम डाइवर्ट ना हो. व्हाइल द रीडर, जो रीडर सामने हो उसको इंटरेस्ट लगना चाहिए. एंड दैट एक्सट्रैक्ट और दैट राइट अप इट मस्ट बी सिंपल. एंड आफ्टर दैट देयर इज सीक्वेंसिंग का मतलब ये कि जो इवेंट्स आप लिखना चाहते हैं, द इवेंट्स विच यू वांट टू डिस्कस, विच यू वांट टू राइट अप, जो इवेंट्स आप उस एक्सट्रैक्ट में लिखना चाहते हैं, राइट अप उनको करना चाहते हैं, दे मस्ट हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस. जो फैक्ट्स, जो आइडिया, जो थॉट्स आप पहले लिखते हैं उनका कोई ताल्लुक ना हो जो जहां पर इसको आप कंक्लूड करते हैं, जहां पर उसको आप एंड करते हैं. आप उसमें कुछ बीच वाली मीनिंगफुल, जो नॉन मीनिंगफुल चीज़ें हैं आप उसमें वो ऐड करते हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो एक मोनोटोनी, इसमें देयर मस्ट नॉट बी मोनोटोनस रिपीटेड यूज ऑफ sentences that loses interest. So you must have a proper and balanced idea what we have to write, कि हमें क्या लिखना है, हमें क्या नहीं लिखना है. So there must be a proper sequence. About the facts, about the ideas, about the intentions, about the writer. Or in general we can say that आपको एक क्लैरिटी, एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए हमें क्या लिखना है, हमें कहाँ पहुँचना है. So these are the important 7 steps that makes your writing far more effective. And after that, when we are writing, जब हम राइटिंग करते हैं हमें कुछ ड्रिल करनी है राइटिंग में. वो ड्रिल ऐसी होती है, we are having various steps in effective writing, that is जिसको बोलते हैं प्री राइटिंग स्टेज. प्री राइटिंग स्टेज का मतलब है लिखने से पहले what sort of idea we must have while we have to write anything. Say for example, अगर आपको लिखना है कि wonders of science या use and abuse of internet, आपके पास एक ऐसे है, आपके पास एक you must have some core ideas about the topic, or you must develop a good theme about the topic first. And जो आप जिसको बोलते हैं वो इफेक्टिव स्टेप्स आते हैं आपके प्री राइटिंग स्टेज, वो राइटिंग से पहले वो स्टेप्स जो आप फॉलो करते हैं. उसमें सबसे पहला पॉइंट है जहाँ जो रिफ्लेक्ट करता है पर्पस ऑफ राइटिंग. आप किस कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज लिखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्पस यू आर हैविंग इन दैट राइटिंग. आप उस राइटिंग से क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने रीडर को, जो उसको पढ़ने वाला होता है, जो सामने वाला होता है. तो उसको बोलते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, द पर्सन फॉर हुम इट इज रिटन. अगर कोई ऑफिशियल है उसको क्या क्या लिखना है, द लैंग्वेज, द स्टाइल ऑफ राइटिंग जो आप उसमें यूज करते हैं, आप किस किस्म की लेग्जिटी डेवलप करते हैं अपनी राइटिंग में, दैट इज टू बी अंडरस्टूड, दैट इज इट्स टू बी नीडेड. द पर्सन फॉर हुम इट इज द रिटन. अगर कोई
आपसे लो ग्रेड का बंदा है, उसमें क्या कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, या जो आपको हायर ऑफिशियल है उसमें कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, या जो स्टूडेंट है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी, या जो बड़ी मैच्योर बंदे हैं सोसाइटी के लिए आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, वहाँ पर मेरे लिखने का स्टाइल, लिखने की लेवल कैसी होनी चाहिए, वो भी हमें देखनी है. एंड आफ्टर दैट द कंटेंट ऑफ द मैसेज टू बी कन्वेड. कंटेंट मीन्स जो मवाद आप उसमें डालना चाहते हैं, मवाद आप उसमें डालना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हमें उसी लेवल पर लिखनी है. हमें बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है. हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें सिंपल सेंटेंस यूज़ करने हैं. एंड each sentence it should follow another sentence in its meaning एंड इन इट सीक्वेंस. वो अपनी सीक्वेंस में और अपनी मीनिंग में दूसरे सेंटेंस को, दूसरे इवेंट को फॉलो करना चाहिए. हमें इवेंट टू इवेंट फ्लक्चुएट नहीं होना है. उससे क्या मीनिंग पर असर पड़ेगा, सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, सिंपलिसिटी वो खो देगा, कंप्लीटनेस उसमें नहीं रह जाएगी, एक्यूरेसी पर फर्क पड़ेगा, कंसाइजनेस नहीं रह जाएगी, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो क्लैरिटी. द रीडर विल रीच नोवेयर एंड इन दैट सेंस ही विल लीव. उसका इंटरेस्ट वो खो बैठेगा और आप वहां पर उस आईडी का कोई फायदा नहीं है. एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर, द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट दैट द राइटर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रीडर. The result of the effect that the writer expects from the reader. We must have this apprehension prior in mind. We must keep this point prior in our mind. What sort of level we must use while we are writing any extract. जब भी हम कोई चीज लिखना चाहते हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है सामने वाले रीडर पर. What sort of brightness we must have in our ideas, in our expressions, in our beliefs, in our thoughts. तो वो चीजें हमें जहन में रखनी है, तब जाके हम देखते हैं कि जो सामने वाला रीडर होगा उसको सबसे बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस बनेगा. एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द राइटिंग स्टेज. अब जब आप लिखते हैं राइटिंग स्टेज, मेन कंटेंट जिसमें आप डालते हैं, वो जो कंटेंट होता है इट मस्ट बी थीम ओरिएंटेड, इट मस्ट नॉट डिविएट. ये ग्रामेटिकल एरर्स कम होने चाहिए. आपको ग्रामेटिकल एरर्स पे ज्यादा जोर देना है. जहां पर हम देखते हैं कि राइटिंग स्टेज आफ्टर दैट देयर इज वन मोर लास्ट जिसको हम बोलते हैं एडिटिंग स्टेज का मतलब है प्रूफ रीडिंग. वंस यू हैव रिटन एनी एक्सट्रैक्ट, आपने कोई मैसेज, आपने कोई चीज लिखी है, देन यू मस्ट गो थ्रू इट्स प्रूफ रीडिंग. कोई ग्रामेटिकल एरर मत है, या मैंने इसमें इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ज्यादा मत इस्तेमाल किए हैं, या मैंने कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस ज्यादा इस्तेमाल मत किए हैं. हाँ, समटाइम्स वी सी दैट, कभी कभार हम देखते हैं कि वी आर हैविंग लॉन्ग सेंटेंसेस. हम कभी कभार मैसेज में बड़े बड़े लंबे सेंटेंस यूज करते हैं. when there we must take care, वहां पर हमें ये केयर करना है कि that as sure or as possible as we must cut those sentences to make them more simpler. हमें वो और ज्यादा simpler करने चाहिए. And we must maintain main ideas. We must use proper grammatical tools. I mean to say that commas, punctuation marks, full stop, capital letters, small letters. At times, if we understand that the reader in front of us is versatile, it is mature, then we will take the help from some other kinds of grammatical tools. Those are being called as metaphors, phrasal verbs का यूज कर सकते हैं, मगर वहाँ पर हमें लेवल रखनी है. If the reader is of mature level, वहाँ पर हम phrasal verbs, so that the write up it will feel enough eloquent. ये eloquent, ये beautiful बनेगा, क्योंकि phrasal verb से जो मैसेज होती है उसमें literary taste आता है. And that sense that would feel beautiful. And I hope, dear students, you may have followed how we have to write up things. और कल इंशाल्लाह in the coming lectures मैं आपके सामने होम असाइनमेंट दूंगा, कुछ यहाँ से भी टॉपिक्स, कुछ होम असाइनमेंट्स जो आपको राइट अप करने हैं घर में. and we will monitor your homework accordingly. Thanks.